Good afternoon, dear friends and students. Actually, today in this session, we are going to study about design of RCC structure. Let's complete all the setup so we can just start this session. In today's lecture, we are going to see the design of RCC structure, how to perform or how to start analytical problems. In this live streaming, the basically design of RCC structure and estimating and costing, these both the subjects that I am going to cover. While teaching this, both the subject, I will use uh, three different languages. You can just consider Marathi, English, and Hindi because the viewer are from all these particular languages. Okay, so we will just start with the today's session. Related to the RCC, we are having, in particular, this subject we are having two different parts, and that is nothing but design of steel structure and design of RCC structure. Wherein in this particular sessions, we are dealing with the purely RCC structures. So, hope you will enjoy the learning with me. So what exactly design of RCC structure means? Basically, आप लोगों ने डिफरेंट मेंबर्स देखे होंगे साइट पे, जो आप साइट पे कंस्ट्रक्ट किए हुए, समझो बीम होगा, कॉलम होगा, स्लैब होगा, बीम, slab, column, whatever may be different member that you are uh, observing on the site. That members are comprises of two different. Means it is having a particular shape, right? And this particular member is comprised of two different material, which is nothing but concrete and steel. Two different materials are provided in any structural member. Okay. So जब आप लोग पढ़ाई करने होंगे डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर का, तो सबसे पहले हम लोगों को एक चीज मालूम होनी चाहिए कि जब हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं, डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो जब भी कोई स्ट्रक्चर के ऊपर अगर लोड आता है, फॉर एग्जांपल अगर पी लोडिंग है, और पी लोडिंग अगर देते टाइम में मुझे, अगर मैं देख रहा हूँ कि मुझे क्या क्या एक्शंस या पर्टिकुलरली इसके ऊपर लोड अप्लाई करने के बाद में व्हाट आर द रिएक्शंस और क्या डिफरेंट डिफॉर्मेशन हो सकते हैं, देन वी कैन गो फॉर understand what exactly things are supposed to be provided to carry which kind of stresses. Okay. So आप लोग अगर एक एग्जांपल देखेंगे, अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल पे या ऑब्जेक्ट पे लोड अप्लाई किया है, तो लोड अप्लाई करने के बाद में इसके अंदर क्या होता है, सिंपली इट गेट्स डिफॉर्म, राइट, लाइक दिस. So when it is deforming, if you observe properly, it will create a tensile stresses or tension over here, right, and compression at this particular location. So we basically we can understand that two different phenomena is going to be developed over here, which is nothing but tension and compression. So for looking after compression or compressive stresses, we are considering concrete, or some of the time in a further lecture we can understand that the steel can also be used for carrying some part of some percentage of the compression by steel. Okay, but now it's okay, we are not going to see or discuss about the steel in compression zone, but
the purely concrete will carry the compressive stresses, and for tensile stresses or the tension, steels are provided on the bottom edge. Okay, so such a kind of the two different material nowadays we are using. Generally, this steel reinforcement is commonly used nowadays. Rather, you can just see some different materials instead of steel also can be or being used. You can see one more material, that is bamboo. If you check on the YouTube that which materials are being used as a reinforcement in cement concrete, so you can see some other materials also. So basically nowadays popularly we are using steel, and that's why in this RCC member that reinforced cement concrete we are considering steel and concrete. So when we are going for this particular discussion, two different materials are being used. So what exactly basic knowledge should be along with me while going for analysis or design of this structure? So basically what you need is you should understand first of all what are the different types of the section. Okay, because if we draw this section depends on the neutral axis, means you can say that this is a neutral axis. Okay, so this is your cu, means compressive force, and this is your tensile force. Or here you can say that it is area of steel that you are having, and this distance from extreme top fiber up to the neutral axis, this is called as a XU. Okay, so depends on the value of XU and the location of neutral axis of CU and TU, we are having some of the different conditions or different sections. What is that? So first one is a balance section. Okay, in beam we will have three different types of the sections, wherein the first one will be balance section. Then second one will be a under reinforced section. And third, the last one will be over reinforced section. So जब भी आप लोग कैलकुलेशन करोगे या एनालिसिस करना है या डिजाइन करना है, एनालिसिस के टाइम में सबसे पहले आपको इसको जो भी सेक्शन दिया हुआ है उसको आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेक्शन दैट यू आर एनालाइजिंग, एंड अकॉर्डिंग टू यू हैव टू एनालाइज इट. ओके, सो ये तीन डिफरेंट टाइप है, बैलेंस सेक्शन, अंडर इन्फो सेक्शन एंड ओवर इन्फो सेक्शन, which can be compared with the help of XU and XU limit. If your XU is equals to XU limit, the XU limit is nothing but what the dimension of this particular neutral axis from extreme top fiber when the Cu and Tu's values are both are reaching its maximum permissible value at same time. Okay, so that is nothing but XU limit. So when XU is equal to XU limit, then आप लोग बोल सकते हो कि आपका सेक्शन जो है बैलेंस सेक्शन है. अंडर एनफोर्स सेक्शन में क्या होता है, व्हेन योर एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिट है, यानी क्या हो जाता है आपका कंक्रीट का स्ट्रेस जो है दैट विल रीच इट्स परमिसिबल वैल्यू फर्स्ट. एंड ओवर एनफोर्स में क्या होता है, व्हेन योर एक्सयू इज ग्रेटर देन एक्सयू लिमिट, देन दिस विल बी द पर्टिकुलर पैटर्न. Okay, so like this, we can decide that which kind of section we are having. Not only on the value of XU and XU limit, rather you can just think that is it which particular limiting value is reaching first. Okay, so just we will have one more another thing over here. I will draw a stress strain diagram for the beam section. Beam का
बीम के लिए हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम along with all the details we will draw. This is AST, this is small b up to the center is small d, this is XU. Okay, if we go on drawing the diagram, स्ट्रेस डायग्राम में क्या होता है, थोड़ा जो स्ट्रेट लाइन है और फिर पैराबोला है यहाँ तक, this value is 0.446 FCK, the stress value. Here you are having CU, here you are having TU, and stress of steel is equal to Fy, and it is saying Fy. Okay, this is the stress value. The dimension of CU from this particular location is 0.42 XU. This again dimension is XU. And if we go on checking for strain value, okay, so this is nothing but strain in steel and strain in concrete. The strain in concrete is nothing but 0.0035, and strain in steel is nothing but 0.87 Fy divided by modulus of elasticity of steel plus 0.00. Okay, so these are the values that we have to we are supposed to just consider. Okay, अभी इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो हम बेसिकली एनालिसिस करते टाइम में हम लोगों को क्या क्या चाहिए वो हमको मालूम होना चाहिए. सो जनरली एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वी शुड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स यू एंड इट शुड बी कंपेयर्ड विथ एक्स यू लिमिट, राइट. सो हम लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि एक्स यू कैसे निकालते हैं और एक्स यू लिमिट के लिए कुछ फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं क्या, वो हमको देखना है. ठीक है. So for finding out XU limits formula or some coefficient, we will use this strain diagram. Okay, for finding XU limit, use strain diagram. ठीक है. तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास स्ट्रेन डायग्राम है, मैं वो स्ट्रेन डायग्राम निकाल लेता हूँ. This is XU, this is nothing but small d, so this will be a d minus XU, right. This is what epsilon c, this is what epsilon s, right. So what I will do, इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो भी हमारा रिलेशन है, by using that I will just take down XU divided by D is equals to epsilon C divided by epsilon S plus epsilon C. I will use this particular relation from equal angle triangle relationship. Okay. अभी हम लोगों को क्या करना है, XU by D, we are interested to find out the value of XU. एंड राइट, जब मैंने आप लोगों को बोला था कि लिमिटिंग वैल्यू यानी एप्सिलॉन सी इज लिमिटिंग वैल्यू, यानी जहां पर फेलियर हो रहा है, दैट वी आर गोइंग टू यूज. सो आई विल राइट डाउन इन ऑल द condition it is limiting, so obviously this will be also limiting value, right, because we are interested to find out XU limit. So now
put all the values that we know. So XU limit divided by small d will gives me write down the answers. Okay, so what is epsilon c? The epsilon c is 0.0035 divided by epsilon s is nothing but 0.87 fy divided by the modulus of elasticity of steel is 2 into 10 to the power 5. Okay, plus 0.002. This all is nothing but epsilon s strain in steel, and strain in concrete is supposed to be added 0.00. Okay, so this will be the particular formula that we will have in our hand. So now when we are supposed to, just a moment. So ये वैल्यू मिलने के बाद में हम लोग क्या करेंगे? आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं? वंस मैं फिर से एक बार सब वैल्यू यहाँ पर लिख लेता हूँ. XU limit divided by d is nothing but or equals to 0.0035 divided by epsilon s. Epsilon s का फॉर्मूला क्या होता है? 0.87 fy es किंवा या es च्या जागेवर आपण डायरेक्टली 2 raised to the 2 into 10 raised to the power 5 डायरेक्ट घेऊ. मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील जी काय आहे इंटू 0.002 आणि प्लस 0.0035. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर एक गोष्ट अजून कळेल आपल्याला की एफ वाय सुद्धा आपल्याकडं अननोन आहे, कारण की आपल्याला एक्सयू लिमिटची व्हॅल्यू ही इन टर्म्स ऑफ डीज भेटणार आहे. इट्स ओके, एका अननोनच्या कम्पॅरेटिव्ह मध्ये असेल तर डझंट मॅटर, बट दुसरी व्हॅल्यू जी आहे एफ वाय ती आपल्याला कन्सिडर करावी लागेल. म्हणून आपल्याला काय करावं लागेल? वी विल गेट दी व्हॅल्यू ऑर द फॉर्म्युलेशन फॉर एक्सयू लिमिट फॉर डिफरंट ग्रेड ऑफ स्टील्स इन टर्म्स ऑफ स्मॉल डी. मग बघा आता इथं काय करूयात आपण? I will assume instead of assume I'll write down considering mild steel XU limit by D is equals to 0.0035 divided by 0.87. आता FY च्या जागी माइल्ड स्टील म्हणजे काय असतो नेहमी? तर माइल्ड स्टील इज नथिंग बट FY 250, राइट? सो 250 divided by 10 raised to the power 5 plus 0.002 प्लस 0.0035. ओके, सो यात काय करा, ज्यांना कॅल्सी यूज करायला काही अडचण आहे किंवा केलेली नसेल व्यवस्थित, त्यांनी सर्वांनी कॅल्सी मध्ये काय करायचं बघा, पहिली ही टर्म सॉल्व्ह करून घ्या. त्यानंतर या टर्मला 0.87 ने मल्टिप्लाय करा, त्यानंतर 0.002 ऍड करा, त्यानंतर त्यामध्ये 0.0035 ऍड करा आणि या सगळ्या आन्सरला 0.0035 ने डिवाइड करा. सो व्हॉट यू विल गेट, द व्हॅल्यू इज 0.53. 531 something value you will get. So okay, I will write down 0.53. बट आपल्याला सगळ्यात पहिल्यात काय करायचं होतं? आपल्याला हा एक्सयू लिमिट हा इन टर्म्स ऑफ डी पाहिजे होता, बरोबर? म्हणून मी काय करायला, एक्सयू लिमिट इज इक्वल टू, आता एक्सयू लिमिट हा डी च्या टर्म्स मध्ये इथं डिनॉमिनेटर मध्ये आहे, तर इथे गेल्यानंतर तो मल्टिप्लाय मध्ये होईल. सो डिवायडेड बाय जो होता तो इथे मल्टिप्लाय मध्ये चालला आहे, अँड दॅट्स वाय आय विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ 0.53 डी फॉर FY 250 न्यूटन पर मीटर. ओके, असंच मला काय करायचं आहे आता, वेगवेगळ्या ग्रेड ऑफ स्टील साठी माझ्याकडे ग्रेड ऑफ स्टील कोणकोणते असतात बघा. जर तुम्ही बघितलेलं असेल, ऑलरेडी स्टडी केलेला असेल, तर तुम्हाला कळेल की 3 डिफरंट ग्रेड ऑफ स्टील दॅट वी आर हॅव्हिंग ऑर वी आर युझिंग ऑन साइट. दॅट इज FY इज इक्वल्स टू, किंवा ग्रेड ऑफ स्टील म्हणून आपण डायरेक्टली ग्रेड ऑफ स्टील. एक आपण FE 250 स्टील वापरतो, जे माइल्ड स्टील नावाने सुद्धा ओळखलं जातं.
जनरली माइल्ड स्टील आता वापरले जात नाही, Fe415 आणि Fe500च वापरले जातात. बट स्टील ओके, इन युअर करिक्युलम यू आर हॅव्हिंग दिस पर्टिक्युलर ग्रेड ऑफ स्टील, सो यू हॅव टू यूज. ओके, सो 3 डिफरंट ग्रेड ऑफ स्टील्स आपल्याकडे आहेत आणि या 3 डिफरंट ग्रेड ऑफ स्टील साठी तुम्हाला काय करावं लागेल, इथं तीनदा कॅल्क्युलेशन करून या तिन्ही Fe250 साठी तर आपल्याला आता कळालेलं आहे की 0.53D आहे. Fe415 ची व्हॅल्यू टाकून परत तुम्हाला हा एक्सयू लिमिटचा व्हॅल्यू काढावा लागेल आणि Fe500 साठी सुद्धा तुम्हाला हा व्हॅल्यू पुट करून काढावा लागेल विदिन दिस पर्टिक्युलर फॉर्म्युला. हा जो एक्सयू लिमिट बाय डी चा फॉर्म्युला आहे, यामध्ये तो पुट करा आणि ते कॅल्क्युलेट करा. तुम्ही एकदा काढून झाल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की तुमच्याकडे काय काय व्हॅल्यू आहेत. Fe250 साठी तुमच्याकडे 0.53D आलाय. अगेन एक्सयू लिमिट फॉर 415 will be 0.48D for FY415, and XU limit will be 0.46 times D for FY500. ओके, सो अशा प्रकारे तुम्हाला या तिन्ही गोष्टींच्या व्हॅल्यू इथे भेटेल. व्हॅल्यू भेटल्यानंतर मी तुम्हाला म्हणजे आवर्जून सांगेल, या गोष्टी ज्या आहेत तुम्हाला आता नेहमीसाठी वापरायच्या असल्यामुळे साईडला एक तुम्ही टेबल बनवून घ्या याचा, ज्यामध्ये व्यवस्थितरित्या ज्या ज्या गोष्टी आपल्याला लागतात त्या आपण लिहून घेऊया. सो विल राईट डाऊन सिरियल नंबर, देन grade of steel, then Fy in Newton per mm square, and value of x. So असा टेबल एक तुमच्याकडे जर रेडी असला, सो इट विल गिव्ह मच मोर इफेक्ट, और तुम्हाला ते बाय हार्ट होण्यासाठी फार फायदा. मग नंबर 1, 3 टाईपचे ग्रेड आहेत आपल्याकडे, 1 2 3 लिहितो. सो ग्रेड ऑफ स्टील मध्ये काय काय आहे आपल्याकडे, 3 डिफरेंट टाइप के ग्रेड ऑफ स्टील अपने अवेलेबल है, जिसके अंदर क्या क्या है हमारे पास. Fe250, उसके बाद में Fe415, एंड लास्ट वन वी आर हैविंग Fe500, राइट. सो Fy होगा 250, it will be 415 and it will be a 500, राइट. सो 250 के लिए हम लोग क्या वैल्यू मिला है, एक्सयू लिमिट इज इक्वल टू 0.58D, then 0.48D and 0.46D. So these formulas are very important while going for the analysis of one particular type of the structure. तुम्हाला आता याच्यातून कळालंच असेल की आपल्याला काय करायचं आहे, why this XU limit or XU's value that we are interested to find out. बिकॉज हम लोगों को क्या करना है, एक्सयू लिमिट की वैल्यू एक्सयू जो भी प्रॉब्लम रहेगा उससे हमको कंपेयर करना है, बराबर. क्योंकि अगर व्हेन वी विल कंपेयर इट, सो आफ्टर कंपैरिजन वी कैन फाइंड आउट विच टाइप ऑफ सेक्शन दैट वी आर हैविंग, और उसके ऊपर से हम लोग एनालिसिस प्रॉपरली कर पाएंगे. ठीक है. सो होप यू हैव अंडरस्टूड दैट हाउ टू फाइंड आउट दिस कोएफिशिएंट्स फॉर फाइंडिंग आउट एक्सयू लिमिट, और यू कैन से दैट द बैलेंस सेक्शन के लिए जो एक्सयू की वैल्यूज है वो Fe250, 415, 500 ग्रेड ऑफ स्टील अगर होगा तो क्या होनी चाहिए, दैट वी हैव फाउंड आउट इन दिस लेक्चर. इन नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर वी विल just create, or we will just find out how to just formulate the formula of for XU bending moment. These all things we are going to see, and in further upcoming lectures we are going to just take some problems on singly reinforced, doubly reinforced, again analytical and design aspects that we are going to see. Okay, hope you have understood all the things that I am explained today. If you are having any of the questions, you can just ask me in comment section. If you post, I will just give you the आंसर. उसके अलावा भी एक ग्रुप है जहाँ पर हम लोग ऑलरेडी ज्वाइंड है, सिविल इंजीनियर फैमिली बोल के, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं चाहिए तो लिंक दे देता हूँ. इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड टू ज्वाइन दैट group on Telegram, you can join from that particular location, and you also all can ask any kind of the questions related to civil engineering. Thank you very much.